Every father is a superman, and every mother is a superwoman, and conscious parenting is their true superpower. For the ones who know me, my name is Kamalneet Singh. For the ones who don't know me, my name is still Kamalneet Singh. The name doesn't change, right? I'm a TEDx speaker, an author, a changepreneur, and a mindset coach. And I welcome each one of you to this series called Success Principles by Successful Principles. This is specially curated for all the parents out there because I know I'm a parent too. I know that parenting is one journey for which we prepare, but no amount of preparation takes care of the whole journey. And the idea behind the journey is that if a parent can learn from masters who have been in the field of education for many, many years, the journey becomes a little easier. And they say that, in the whole world, we have right from manufacturing a pin to manufacturing a plane. I never fail to say this. We have everything, but the moment it comes to parenting, there's a lot of hit and trial that happens. And while there is nothing wrong with hit and trial, but when you can learn from the experiences of others, you can probably avoid making a few mistakes in your journey with your kids, and that makes it a journey that they will always remember. And on this show today, we have a very, very special guest today. I'm excited about this episode. I can give you a guarantee, all the parents out there, I can give you a guarantee, all the educators, all the parents, all the viewers out there, there's so much that you will take away from the same. And hence I have a suggestion. If you have a pen and a paper, or if you don't, you might want to grab one so that you get the best nuggets from the conversation and you put them to use right after the conversation. So we have with us Mrs. Neeta Dua, who is the principal of Little Flower Public Senior Secondary School, New Delhi, with us as the guest. Madam, welcome to the show. It is indeed an honor to have you on the show with us today. Thank you so much, Kamalneet, for such a nice introduction. I am highly obliged to be here today. Even I'm more happy that I'm getting this opportunity today. Just I'm waiting for you. It is and it to is share indeed my thoughts and give a few advice on the parenting. After all, I am because of my parents, mummy and papa. I really feel grateful and blessed to be raised by my parents and who have such a wonderful style of parenting. glad we are glad to hear your journey. And for all the viewers out there, uh, you know let me give you a little more details about madam, and so that gives you an idea about her journey. Now, she's an educator who sits on 35 years of experience. 35 is almost 3.5 decades. and Definitely, you're right. and that's a big Mm. experience out there. And she's somebody who has been leading the school in her best capacity, that has seen outflow of so many successful students. And she's somebody who believes that every student should be prepared for life. Now, when you talk about what all has she done in the past, she's somebody who has done her B.Ed, and she's also done her M.Ed in history and economics. I mean economics. M.A. in economics. And जैसे ही economics की बात होती है ना, so सबसे पहले मेरे दिमाग में the first thing that comes to my mind is my economics teacher, who would talk about the demand and supply. And so let me give you a little more brief. So she's somebody who works Kamalneet, I have done M economics at the age of the 52. at the age of 52. Now, madam, this is something 52. that I did not know. This is Mhm. a news for me. So everybody watching the series, anybody who now says, मेरी तो अब age नहीं है और पढ़ाई करने की. Mhm. So, madam, you have proved it that there is no limit to that particular age. And I'm Yeah, I glad. faced the number of challenges and the health also number of the challenges during the M economics. And despite that, you did not stop. Health Despite that, challenges already faced. correct. And despite that, you did not stop. You went on. So all the parents out there, all the viewers, there is no age. Is definitely No age bar. there's no age bar. Yeah. I think I've never proved kar diya, there is no age Yeah. bar. And she's somebody who has won various awards throughout her journey, and she's received the prestigious State Teachers Award from Honorable Chief Minister Shrimati Sheila Dikshit,
Yeah. Education Minister, Mhm. Shri Arvinder Singh Lovely. Yeah. Not just that, she's somebody whose hat is filled with awards, be it Dr. Radhakrishnan Award, Priyadarshini Award, Maharishi Patanjali Samriti, Rashtriya Shiksha Sadan Award, Sharda Sri Award. She's received an award for global sustainability by ARC. She's also received award for school excellency as an innovator of the year by EduAdvice. And the list goes on and on Just and long. on. and she's somebody who feels that every child, if given the right guidance at the right time, at the right age, can blossom into a fantastic human being. Madam, Mhm. before we move ahead, the whole thing that you said about, you doing your MA at 52 in itself Mhm. is inspiring. Now that we talk about the journey of the series, which says that, the series is all about success principles by successful principles. And, you know, सभी के लिए, for every individual, success का एक बहुत ही different definition है. It's a Definitely. very different definition for everybody. I would like to know कि how do you define success? For you, success का क्या definition है? Success is actually very broad term. Correct. It Correct. means differently to different people according to situations, the environment, Correct. and family. In fact, सबका एक अपना एक पैमाना है बिल्कुल. सफलता नापने का. बिल्कुल. Some people think that a hefty pay package determine our success. कि आपका pay package जितना high है तो आप Correct. successful हो. Correct. Some relate success to popularity. अगर आप अमिताभ बच्चन हो तो definitely तो हम हैं. Some see जैसे myself and Mrs. Dua भी famous हैं, popularity है. तो some see success. मैं अपने आप को बड़ा वो देती हूँ, मतलब बोलते हैं gratitude. सब लोग अपने आप को बड़ा कम देते हैं, लेकिन देना चाहिए. Correct. आप appreciate अपने आप को पहले दें, जब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. Correct. Some see success in reaching the top position, but I think depends on the individual hard work. It's very important. Success is when what you wish to do, what you do are in alignment. It is fueled. अगर आपने किसी गाड़ी में इंजन भरना है, तभी आपकी गाड़ी चली, तो फ्यूल कौन सा होना चाहिए? पैशन, कंसल्टेशन और चैलेंजेस को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं. तो I believe the one who can inspire others to dream is successful. The one who is satisfied with his contribution to society. मेरा एक मोटो है कि आपने गुड सिटीजन कैसे बने. आई एम हिस्ट्री टीचर, तो फर्स्ट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सिटीजन की जो ड्यूटीज हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. तो राइट्स और ड्यूटीज जब साथ साथ चलती हैं, तो आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब आप सक्सेसफुल माने जाएंगे. मैडम, मेरा ना एक थॉट आया है. आपने जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की, सो आई हैड दिस थॉट कि कहीं ना कहीं, आई थिंक, एंड द व्यूअर्स विल बी स्माइलिंग लिसनिंग टू दिस, कि जब हमारी राइट्स की बात आती है ना, तो सारे झंडे लेके खड़े हो जाते हैं. सजग. लेकिन जब ड्यूटीज की आती है, कहीं ना कहीं, नॉट फॉर एवरीवन, बट कहीं ना कहीं, व्हाट इज सीन इज कि ड्यूटीज के टाइम कहीं ना कहीं हम उतना आगे नहीं आते हैं जितना हम राइट्स को लेके आते हैं. सो आई डेफिनेटली ड्यूटीज नंबर 1 है. ट्रू. तो डिमांड करें राइट्स की. तो इट मींस इफ यू सीक सक्सेस, स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ as successful. Correct. Definitely success knock your doorstep. कि वो सक्सेस आपके खटखट करेगी कि मैं आ चुकी हूँ. Correct. तो मैं सक्सेस का आपको एक डिफाइन कर सकती हूँ, बल्कि सक्सेस तो बहुत डिफरेंट टाइप का एक वर्ड है. सक्सेस, सफलता हमें कैसे हासिल करनी. तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहाँ से है, एक उन्हें टारगेट का कमिटमेंट था, डिटर्मिनेशन था, उनका डेडिकेशन था. तो ये जो सब कुछ है, यही हार्ड वर्क है हमारा, यही सक्सेस है. करेक्ट. एंड मुझे ना वो एग्जांपल आपका बहुत अच्छा लगा. आपने कहा कि जैसे गाड़ी के इंजन में हम फ्यूल डालते हैं, तो सक्सेस के लिए हमें पैशन, कंपैशन, हार्ड वर्क, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, कमिटमेंट. एंड आई थिंक ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, ये वाली जो कॉन्वर्सेशंस हैं, टुवर्ड्स पैशन, कंपैशन, हार्ड वर्क, डीलिंग विद चैलेंजेस, ये अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हों, वैसे पेरेंट्स, बच्चा है ना, मतलब अपने पेरेंट्स को देखता है कि पेरेंट्स कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं. करेक्ट. जैसे मेरे बच्चों ने मुझे देखा, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा. करेक्ट. आप पहले खुद, अगर आप लेजी हो तो आपका बच्चा नहीं सीखेगा कुछ भी. आप पहले खुद हार्ड वर्क बनो.
सो देखो ये जितने लेजी वाले पेरेंट्स बैठे हैं ना वहाँ पे कैमरे के हाँ, पीछे, सुन लो। ये आपकी बात हो रही है, ठीक है? अच्छा मैंने नहीं डेफिनेटली बोला, तो ये मम्मा मैंने जो लंच नहीं देती और बिस्कुट और मैगी देती है। ये देखो ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैडम ने बोला, बट हाँ, मैं बच्चों को लंच चेक you करती हूँ कि प्लीज परोठा बनाइए, सब्जी बनाइए, वेजिटेबल्स दीजिए। know, but definitely jokes apart, you know what you said is very powerful. हम्म, uh, Role model plays an important role, and that's what you said. हम्म, कि role modeling जो है, that's very very इट्स crucial. वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. Now madam, moving on, you know, अगर आप, you know, you have been dealing with parents for, you know, almost 3.5 decades. My journey is about, you know, 10 odd years wherein I've been moving around with parents, talking to them, teachers and kids. You speak to any parent, हर parent की कहीं ना कहीं एक यही चॉइस होती है, यही एक ख्वाहिश भी होती है कि मेरा बच्चा जो है वो सक्सेसफुल बने, and he should डेफिनेटली। become a good human being, right? Now, for a child to become successful and a good human being, what does it take? कैसे बच्चा बनेगा, रियल लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनेगा? Actually, millions of people, parents dream of success. We can't achieve success just by dreaming. You will agree with me that we may not achieve success in the first effort. एक True. पहली बार में आप नहीं कुछ सीख सकते. Correct. We may have to face failures to reach the desired destination. अगर आपको destination पे जाना है, तो आपकी जो है उसको failures को भी accept करना पड़ेगा. Then आप उसको milestone जो धीरे धीरे चलता रहेगा, तो आपके definitely success पे पहुंच जाएंगे. अगर but if we are determined, we shall certainly get success. Determined एक बड़ा important word है कि दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है. अगर आज जैसे मैंने सोचा कि मैंने अपना ही काम करना है, मॉर्निंग में ही मैंने अपना एक टाइम टेबल मैनेज कर लिया, तो डेफिनेटली डिसिप्लिन होना भी बहुत लाइफ में कंपलसरी है. तो आप डेफिनेटली आपको बच्चे को जो सक्सेस दिलाना है, तो खुद आप डिसिप्लिन में आइए. इफ द चाइल्ड इज अचीविंग स्मॉल माइलस्टोन, taking small step every day in improving himself as person and working his goals, the child will definitely reach heights all the real success in life. कि बोलना आसान होता है कि बच्चे को सक्सेस दिलाना है, हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो रियल सक्सेस क्या है लाइफ में? अचीविंग द गोल्स. बच्चे ने पेरेंट्स से बोला भाई अब तो बच्चा 18 इयर्स का हो गया, उसको मेडिकल में एडमिशन हो गया, तो मैं गोल को अचीव कर लिए. लेकिन उसके बाद भी एक जर्नी स्टार्ट होगी. आपको उसमें भी काफी कुछ चेक करना पड़ेगा, बच्चे का बिहेवियर, और एडोलेसेंस एज भी खत्म हो गया, वो यूथ में आ गए, तो आपका सब चीजें उसमें इंटरेक्शन आएगा. तो टारगेट्स तो चलते रहेंगे लाइफ में. सक्सेस की जो आपने ये क्वेश्चंस पूछा है, ये स्टोरी हमारी जर्नी है, चलती रहेगी. करेक्ट. ऑनगोइंग जर्नी. दिस इज द बिल्कुल. ऑनगोइंग जर्नी. डेफिनेट दोज ऑल द थिंग्स टू डिफाइन योर गोल एंड मिशन इन लाइफ. करेक्ट. एक जो मिशन अगर लाइफ में कर ले, तो बड़ा बेस्ट रहेगा. Correct. So very powerful. You know, all the parents out there, you know, in fact, this is also, they say that learning is an ongoing process, and I think मुझे लगता है कि ये parenting is also an ongoing process, because with changing milestones over the years, you know, so you'll have a different milestone as a parent when your child is younger, then adolescent, then youth, and then when a grown up as an adult, the milestones will keep changing. But what I loved from the conversation is that you said, Yesterday we also discussed that one sentence, परिश्रम सफलता की कुंजी है. correct, तो उसका एक absolutely. स्टोरी में नरेट किए हैं. Please, Once a please. father advised his son to work hard. The Right. child thought, we कैसे hard work करें? He started shifting books and study table from here to there. और थोड़ी देर में उसको बहुत ही थकान सी हो गई. He told his dad कि पापा आज तो हार्ड वर्क बहुत किया है मैंने, सक्सेस कहाँ है मेरी? Oh, when the father came to know the reason of his child tiredness, तो उसने देखा ये तो पुश किया है, इससे काफी कुछ किया. तो he understood there's one instruction जो है वो क्लियर नहीं थी मेरी, वन नॉट क्लियर. तो हार्ड वर्क तो करना है, पर राइट डायरेक्शन में करना है, उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ करना है. फादर ने बच्चे को बोला कि बेटा इसके अंदर आपको कमिटमेंट लाना है. ये जो आपका चैप्टर है साइंस का, फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन को याद करो, लिखो, राइट 4 and 5 टाइम्स. सक्सेस जब मिलेगी जब मार्क्स आएंगे कल आपके. तो ये जो पतवार जो नाव की नहीं चलती है, बिना राइट डायरेक्शन के नहीं चल सकती, तो सक्सेस कैसे मिलेगी आप बताओ. तो सक्सेस के लिए ये स्टोरी मैं कहती हूँ, मेरे फादर ने ही मुझे बोला था, और आपके फादर ने ही बोला. मैंने आपकी काफी स्टोरीज आपकी भी सुनी है, कई बार आपका मैंने सुना है आपको भी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग. You know, so all the parents out there, देखो आपका जो रोल है ना, जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती जा रही है,
आपका रोल और क्रूशियल होता जा रहा है, राइट? आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि अच्छा हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ ही रही हैं सिर्फ। आई थिंक एंड दैट्स ट्रू। There is no shying away from the fact that as a parent the responsibilities will always be there and they will always grow with time. लेकिन जब आप देखते हो आपका बच्चा he is doing well in life, he is growing in the right direction with values, with with attributes that you want, तो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो एक पेरेंट को होती है। पेरेंट्स या टीचर को भी आती है। Definitely, no doubt about that, no doubt about that. So madam, tell me one thing, मैंने I've seen some patterns, वो कई बार इतना supportive patterns नहीं होते हैं, and in fact you have had a very long journey, आपने इतने सालों से इतने हजारों पेरेंट्स से आप मिले हो। Tell us something कि कौन से वो patterns हैं जो पेरेंटिंग में बहुत सपोर्टिव नहीं है, या rather some non supportive patterns जो आपने ऑब्जर्व किए जो कि बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है। डेफिनेटली। What would those be? देखो ये पेरेंटिंग स्टाइल कैन अफेक्ट हाउ योर किड्स फील अबाउट देमसेल्व्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नॉट सपोर्टिव पैटर्न इन द पेरेंटिंग जर्नी इन द कंपैरिजन। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सफरिंग को शर्मा जी का बेटा। तो we make, हाँ ये आपका भी है शायद कुछ ऐसा। तो we make the lives of our kid terrible by comparing them with every Tom, Dick, Vigora, Vasima. So why don't we realize that every child is unique? Why can't we support them, nurture them in her talent? Why can't we accept that they may have their own dreams? Why can't we let them in the budding painter, chef? आप उसको म्यूजिशियन क्यों नहीं बनाना चाहते, शेफ क्यों नहीं बनाना चाहते, ब्लॉगर्स क्यों नहीं बनाना चाह रहे? और मेरे यहाँ से काफी बच्चे बन के गए हैं, बॉलीवुड में भी हैं बच्चे, और एक अच्छा मतलब तबला वादक भी कैसे बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है। तो आप उस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट करना है हमें। ये नहीं कि वो बच्चा उसने भी नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो मेरे बच्चे ने नहीं किया, बच्चा बेचारा सफर कर रहे हैं। तो हमारे आई एम श्योर कि जो आपका जो वे है ना, उसको आप अपनी जो आपकी ड्रीम नहीं पूरी होती, कि पेरेंट्स का खुद का ड्रीम नहीं पूरा होता, अपना वो डॉक्टर नहीं बन पाया, वो इंजीनियर नहीं बन पाया, या वो एक बेस्ट फिलोसफर नहीं बन पाया, वो ड्रीम अपने बच्चे में देखते हैं कि इस ड्रीम को मैंने पूरा करूं, बच्चे के थ्रू जीना है। हाँ बस उसके थ्रू जीना है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हर्ड एक अभी आपने एक न्यूज सुना होगा, हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स बनी। तो जो मिस उनका एक क्वेश्चन जो लास्ट बोला था, तो उसके क्वेश्चन भी कंपैरिजन पे ही था। उसने बोला कंपेयर अपने आप से करिए, डोंट कंपेयर अदर्स। उसने मैं हूँ जो कुछ हूँ मैं हूँ, आई एम हरनाज संधू, मैं बिलोंग फ्रॉम इंडिया, आई एम अ पावरफुल लेडी। मतलब ये आपने सुना होगा उसके जो क्वेश्चन का आंसर था। इट्स अ पॉजिटिव एंड हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल। उसके मम्मा भी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें देखो अपना डॉटर को 21 इयर्स ओल्ड है वो जो बच्ची है, एक पॉजिटिव है। उसकी प्रिंसिपल ने उसको लेटर लिख के दिए, कॉम्प्यूटर अपने प्रिंसिपल को भी लेटर लिखा है कि प्लीज आप सब बच्चों को मोटिवेट करिए दूसरे प्रोफेशंस के लिए। अभी मैंने इतना उनके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने बताना चाहूंगी मैं। नहीं, आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कि आई रिमेम्बर मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, तो वो उस क्वेश्चन की वीडियो ही थी जो मेन होस्ट हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। हाँ, लास्ट के जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस थे उनके। करेक्ट, एंड आई रिमेम्बर दैट शी गिव दैट आंसर दैट बिलीव इन योरसेल्फ and don't compare yourself with the बिल्कुल others. You are right. उन्होंने and all the parents out there, this is a very unique I am superwoman. प्लीज मैं अपने आप से कंपेयर करो भाई, मैं नीता दुआ भी मैं ही अपने आप से कंपेयर, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मतलब ये सोचना चाहिए थोड़ा सा। तो बंदा डिप्रेशन से जो है ना, वो पेरेंट स्टूडेंट, मैं अपने टीचर्स को मोटिवेट करती हूँ, भाई कुछ सोचो आप कौन हो, हु आर यू, हु एम आई। फर्स्ट ये क्वेश्चन हु एम आई, कि मैं कौन हूँ भाई। कमलनीत सिंह सोचेंगे भी मैं कुछ हूँ भाई। ये बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है ये, हालांकि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। but very 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 powerful question to ask, and I like what you said. आपने 2 crucial points बोले, and I think all the parents out there, I think जैसे आपने ओपन किया ना, I love that कि हम कई बार अपने बच्चों को we keep comparing our kids with the kids of other people, and आपने कहा वो शर्मा जी के बच्चे, so I love that. So all the शर्मा जी's out there, ऐसे कई बार बोलते हैं मिसेस दुआ का बेटा रोहित तो बड़ा स्कूल को अच्छा कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, वो सबकी उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया,
और हार्डवर्क किया, कमिटमेंट लाए, डेडिकेशन लाए, तो हर कोई ये कर सकता है ना। सिंधु ने की है, इतनी प्यारी बच्ची जो इंडिया की, इतना उसका हमारा नाम कर दिया उन्होंने। वेरी ट्रू। तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड है कि एक जो होता है ना बार बार, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इट विल बी बेटर इफ यू डू दिस थिंग्स दैट वे, इट चेंजेस द वे द चाइल्ड रिएक्शन। सच पेरेंट्स डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड किड। कुछ बच्चे, मैंने कई पेरेंट्स से बात करके देखी है, मम्मा से अलग, पापा से अलग, तो मम्मी पापा के भी आपस में व्यूज ना कई बार नहीं मैच, पापा बोलते हैं कि ना मम्मी ने बिगाड़ा भाई, ये सुनती नहीं है। तो ये सब चीजें जो है, कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट बड़ा एक हेल्दी होना चाहिए, शुड बी हेल्दी। ट्रू। बट मैम आपने ना बड़ा एक, आई थिंक ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, आपने बड़ा एक ये जो कहते हैं ना कि डेली सिचुएशन, डेली लाइफ से एक आपने एक बात उठाई है कि हस्बैंड एंड वाइफ कैन हैव वेरी बड़ा डिफरेंट इंपॉर्टेंट है व्यूज, ये। they can have very different views towards things. In fact, you know, I won't shy away from saying that I have a different perspective towards life and my wife has a very different perspective towards life. But what we ensure is कि हमारा different जो perspective है, we can give both the perspective to our son. Now let him choose कि कौन सा choose मेन हाउ कैन यू मोटिवेट टू योर वर्ड्स, क्या अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करो, ये इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो कैसे। Correct. And I think it's not important for a, you know, वो एक joke चलता है कि when wife says that, you know, जब भी एक, there's a joke that goes around, I'll share it. वो कहते हैं कि जब भी husband wife में थोड़ी सी नोक झोंक हुई, तो husband says कि अब देखो मैं जीत तो नहीं पाऊंगा, so मेरे पास solution क्या है? I simply say that, you know, she's always right. तो वो बोल के वहां से निकल जाऊंगा। Please, thank you, sorry, please. And just we must maintain a balance करना पड़ेगा। Correct. But jokes apart, I think कहीं ना कहीं both the sides, you know, be the father, be the mother, they have the right to be themselves and let the child pick up a perspective जो बच्चे को समझ आए. Right. So, madam, second चीज आपने एक बोली थी, I don't want to miss on that one. You know, all the parents out there, and so you said something which is true, that's happening today. कई बारी as a parent, all the parents out there, कई बारी ये होता है कि, you know, whatever you wanted to do, and let's say you could not do it for any reason, you want to live that dream through your kids. And that's what madam said. And उस पूरे pressure में ना कहीं बच्चे का सैंडविच बन जाता है, you know. बिल्कुल, बच्चे का जो चाइल्डहुड है बड़ा सफर हो जाते हैं. Correct. So we make a request, you know, through the platform. All parents, please. To all be the calm, parents. be cool. Correct. Let the child, you know, let the child explore his career, his life, basis his interest, his aptitude, his choices, and his skills. Right. So, madam, moving on to next one. What I want to know from, so what I want to know from you is that, given your experience, given your interactions with parents, बहुत सारा आपके पास यू नो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन ये सवाल जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला, बिकॉज वो सारे एक्सपीरियंस में से व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज दैट व्हाट विल बी योर टॉप 3, आपकी टॉप 3 सजेशंस क्या होंगे पेरेंट्स के लिए? Successful parenting is not about achieving perfection, but it doesn't mean that we should work towards that goal, set high standard for ourselves first, then our children second. We serve a role model for them. So I would suggest a talk with your child and help their brain integrate by keeping open line of communication. Open line is very important. Okay. You will have a better relationship with your child, and your child will come to you when there is a problem. Correct. अगर वो प्रॉब्लम है आपसे शेयर करेगा और आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट होना है और उस प्रॉब्लम को आपने पॉजिटिवली लेना, नहीं अगर आपने नहीं लिया देन उसके बड़े इफेक्ट्स बड़े रहते हैं, बच्चा हाइड करने लग जाएगा एवरीथिंग. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉक विद द चाइल्ड एंड हैव देयर ब्रेन इंटीग्रेट. नंबर 2 मैं देना चाहूंगी, वर्क एज ए पार्टनर विद योर चाइल्ड. लेट योर चाइल्ड नो दैट यू बोथ आर ए टीम, कीप द हाईली इन्वॉल्वड इन अ लाइफ. जो टनल है कम्युनिकेशन की, वो एक जो है ना वाइड जो होती है वो ओपन और क्लियर. टनल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज वाइड, ओपन है, क्लियर. तो ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है कितना, कई बार मैंने अपनी चाइल्डहुड में सफर किया है कि मेरी मदर काफी स्ट्रिक्ट थे, तो
लगता नहीं ये बात उनको, मेरे मैथमेटिक्स में बहुत पुअर थी मैं। बच्चे ना सुने मैडम मेरी बात। सेम हियर, Same here. ये पब्लिक डोमेन में तो जा रहा है, बट दैट्स हम्म, ओके। तो मैंने एक बार किया, मेरी मदर जो थी, शी इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बहुत अच्छी हो, तो सीए का मुकाबला करती हैं। तो उन्होंने, मैंने किया मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आंसर कॉपी किया अपने फ्रेंड से, और घर पे आके मम्मी ने चेक माई क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर उन्होंने आंसर पूछे, मैंने सब भाई करिए, आपने बड़ा वेल डन, आप तो बहुत अच्छा पेपर करके हैं। लेकिन मुझे बाद में बड़ा फील हुआ कि मैंने अपनी मदर से झूठ बोला, मैंने बता दिया मैंने अपनी फ्रेंड से इसको कॉपी किया था। तो ये होता है कि बस स्टिग मदर का। लेकिन उन्होंने फिर बड़ा उसको मुझे पोलाइटली बोला, नहीं बेटा आगे से मत करना, तो मुझे एक अच्छा फील आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट है, वर्क एज ए पार्टनर विद योर चाइल्ड। और एक थर्ड, हाँ जी, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। सेल्फ कंट्रोल फॉर यूजिंग एक स्क्रीन का जो आजकल बड़ा चल रहा है, हमने डिस्कस किया था कि बच्चे आजकल स्क्रीन जो टाइम है उसको अपने जो नॉलेज के लिए या उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज करें, उस जो नॉलेज को उसको उसमें नहीं करें प्लेइंग वीडियो गेम्स और स्टफ जो दूसरे आइटम्स कर रहे हैं। तो प्लीज आई विल से विद द चाइल्ड अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी शुड बी यूज मोर एंड मोर फॉर द ग्रोथ, कि ग्रोथ के लिए यूज होनी चाहिए, वो उसके लिए यूज ना हो कि वेस्ट कर रहा है वो टाइम। तो प्लीज पेरेंट्स शुड बी अलर्ट कि वो देखें कि क्या हो रहा है घर पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है, वैसे एज ए मतलब टीचर टाइप जो उनको मैं बता रही हूँ। These are important messages. In fact, सेल्फ कंट्रोल फॉर यूजिंग self स्क्रीन। self control for using screen. So I या think all the parents out there, अभी कमाल की बात ये है कि जितने viewers देख रहे हैं, जितने parents हैं, they'll also be thinking कि अगर हमें बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करवाना है, तो कहीं ना कहीं बच्चा ये भी देख रहा होगा कि हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा तो नहीं है। So that's one crucial message. So all the parents out there, keep a check as to how much time are you spending on the screen, and let the child also follow, in the sense that अगर आप थोड़ा सा कम करोगे, if you will spend more time playing with him or engaging him with in a conversation, he will be off the screen. I like the phrase that you use, हाँ डेफिनेटली। tunnel of communication. So आपने personal example भी दिया that you shared with your mother कि कैसे आपने that you copied and आपने सच बताया, and then things were open for you. So no comparison. All the parents out there. So that's another message that we have to take back. Let's accept the child the way he is. जैसे है हमारा बच्चा. No मेनली comparison. इन्वॉल्वमेंट इंटरेक्शन, बोथ आर टू Involvement. टर्म वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. So involvement and एंड engagement इंटरेक्शन विद द and चाइल्ड। interaction with the child plays an important role. Got that. वेरी Now, इंपॉर्टेंट। now moving on, I would like to ask you that कि competition देखो है, we cannot hide from the डेफिनेटली। fact that competition तो हो ही रहा है, बढ़ रहा है, it's growing with time. Now for a child to be ahead of the competition, बच्चा अगर आगे चले and आने वाले time में he should stand out from the crowd, तो उसके लिए बच्चे को कौन से स्किल्स, व्हाट स्किल्स शुड ही लर्न एट एन अर्ली एज? मतलब स्कूल डोमेन में, स्कूल इयर्स में बच्चा कौन से स्किल्स डेवलप करे that gives him that edge? One is the very important self confidence and communication skill. Correct. Yeah, critical thinking are the basic skill required to stand out the real world. If we are extending helping it towards other, we are extending our family, we are extending our support, we are creating a beautiful society. Right. कि अपने स्किल जो हम ला रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर, एक ब्यूटीफुल एक ऐसा समाज बनाए जिसमें एक हैप्पी एक लाइफ हो। एक फर्स्ट चैप्टर एक हमारे सोशल साइंस में फर्स्ट लाइन होती है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो Right. बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, Correct. उसकी डिफाइन करें तो 2 पेजेस में एक में ऐसे लिख सकते हैं हम उसको, Correct. मैन इज ए सोशल एनिमल। Animal. तो ये सोशल वर्ड हम बिल्कुल भूल चुके हैं आजकल। Correct. हम हैं और घर में हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें हैप्पी है। तो प्लीज आप इन्वॉल्व करें ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से, एल्डर पर्सन, तो आपका डेफिनेटली आपके बच्चे का स्किल भी होगा, बढ़ेगा, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, कोई स्टोरी सुनेगा। तो ये स्किल स्टूडेंट के अंदर जब आएंगे, फिर घर में एक जो उसको एक Environment. हाँ, पेरेंटिंग तो डिफरेंट मिलेगी उसको। Correct. वो अपने एक्सपीरियंस आपने भी बताया था, वो ग्रैंडफादर थे आपके, उनके काफी एक्सपीरियंस को आप सुनते थे। तो एक्सपीरियंस जो है दूसरों को सुनना, लिसन करना, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग के अंदर जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्रिएट कर सकते हैं ब्यूटीफुल सोसाइटी जिसमें एक हैप्पी फैमिली उसी को बोला जाएगा, जिसमें बच्चे, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी की कहानियां सुनना, एक्सपीरियंस लेना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा एक हैप्पी मूड रहता है।
और बच्चे की डिप्रेशन भी जाती है, बच्चा पढ़ने में भी अपना बहुत ज्यादा फोकस करेगा। स्टेइंग फोकस और स्टेइंग वो क्या रहेगा, आपको एक अच्छी स्टडी में मिलेगा आपको। Correct. तो ये मैं ब्लेस करना चाहती हूँ बच्चों को इससे। You know, all the parents out there, I like this statement, man is a social animal. You know, iska jo, man ये is a सोशल social वर्ड ना animal. कमल जी स्किप हो गया आजकल जरा, सोशल हाँ. वर्ड ना skip हो गया। I like that joke. So, so हम्म, everybody out there, so man is a social animal, and हम्म, हम social का ध्यान रख रहे हैं. हम्म, But last 2 years में, I think almost 2 years now, I think we हम्म। have realized this statement all the more, madam, बिल्कुल हाँ, क्योंकि 2 फैमिली साल इज वेरी में इंपॉर्टेंट। ट्रू एंड लोगों को everybody is willing मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, फ्रेंड से मिलूं, फैमिली से मिलूं, and I think if these kids can learn to be social, because when they grow up, when our kids they grow up, they will go in the real world outside, and वहां पे communication के बिना And during lockdown, the doesn't work. connection and families bonding is very totally improved during Correct. lockdown. Correct. The bonding, I think there's an angle to it wherein there are families wherein Bonding the हर तरह की bonding है। conversations. ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, Correct. लॉकडाउन में मतलब एडवांटेज ही बड़ा है। 30 इयर्स के बाद तो मुझे हॉलिडे मिला। That's too much of a time. And in fact, uh, yes, the bonding definitely increased, but somewhere I feel कि कहीं ना कहीं बच्चे भी, they also actually want to go out and be with their friends, because uh, when you are social in person, vis-a-vis online social होना थोड़ा सा फर्क जरूर आता है वहां पे. But yes, all the parents out there, teaching your kids to be social is very, very crucial. Now, madam, what I want to know from you is that बड़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, and you've put in a lot of hard work, and definitely we see the result in front of us, that the school is growing, the school is known in the community, the school is known for a lot of initiatives which are being taken in the school. Now, आपकी जो सक्सेस है, बिकॉज सक्सेस मंत्रा पे सीरीज है, जो आपकी सक्सेस है उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या राज है, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? Happy mood, Okay. smile, I can vouch for that. dedication, commitment. Yeah. And my parents and teacher have instilled more moral and ethical values my ideology. My father, Shri D.R. Patel, advised me to follow 3 Ds my life: discipline, dedication, and determination. If you make a goal, you need to follow it with a firm discipline. आप अनुशासन से लग जाओ, उस रेस में शामिल हो जाओ, लेकिन भीड़ में खोना मत। क्राउड को लीड करना है। You have to do it with 100% dedication and determination to ensure success. So dedication and determination along with discipline. मुझे लग रहा है ये D का फॉर्मूला निकल हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। So dedication, discipline, determination. We will call it let's call it the 3D formula. हाँ, Right? 3D फार्मूला, बिल्कुल ये तो आपने formula. अच्छा बोला। हाँ, So dedication, discipline, and determination is the key. So, madam, now we had a beautiful conversation, and you gave a lot of messages for all the parents out there. Now, I have the final one that I wanted to know from you is that what is your message to all the students out there? बच्चों के लिए क्या key message है? great things never come out of the comfort zone, you know. So don't let obstacle intimidate you. कि आप सोचें कि सारी obstacle hurdles जो हैं ऐसे नहीं. It is not what we do, but how we do that makes a difference and stand out of the crowd. ये मेरे फादर ने मुझे बताया था कि क्राउड से डिफरेंट बने आप, ये भीड़ से अलग. द चॉइस इज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ क्राउड या लीड टू द क्राउड. कि आपने क्राउड को लीड करना है या उसका पार्ट बनना है. क्या कमलनीत सिंह बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? यू ओनली कंपटीटर इज यू. ट्राई टू बी बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ एंड वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल. ये आप जो चलना है एक्स्ट्रा चलें तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंट बन जाएंगे. कि आप बोलेंगे भी अमिताभ बच्चन वो कैसे बने, तो आप भी सब कुछ बन सकते हैं. प्लीज वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल. One more thing I would like to add here. Most of the time we live in the past and think about what would have happened and if we had done things this way or that way. Correct. This way
or that way. That way, correct. This needs to be stopped. We need to think about future. So don't focus on what, it's focus on what next. कि next Omicron तो नहीं है. Correct. Huh? Because every day you can do something better. You will certainly discover and learn new things and you will get nearer to your goals. प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, आप डेफिनेटली एक अच्छी हैप्पी लाइफ में रहें और ब्लेस रहें और अपने आप को सेफ रखें. That's a very beautiful message, and I think जो आपने वो वाली एक बात बोली कि you know, compare yourself with nobody else but your previous self, you know, वो message मुझे बहुत अच्छा लगा. And you know, all the parents out there, all the kids out there, all the students out there, हर पेरेंट्स का बच्चा एक बहुत that's प्यारा very है, crucial. सुप्रीम Very है, डिफरेंट है वो. correct. And एक message और था कि crowd का हिस्सा बनना है या crowd को lead करना है. And I think that's another powerful message ये बड़ा coming out. मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है ये. True. It's a very powerful message. It's a very powerful message. अगर हम इसकी depth में जाएंगे ना, so I understand how powerful it is. And so all the students out there, you always have a choice. And choice गलत कोई भी नहीं है. Crowd का part बनना भी एक गलत choice नहीं है. But हाँ बिल्कुल बनो, वो भी अच्छा है. आपका मैंने बोला vision क्या लिसनिंग भी है? करना, हमने लिसनिंग भी Correct. सुनना भी है. तो हम Correct. क्राउड का पार्ट बन के भी सुन सकते हैं. लिसनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. Correct. तो But the बच्चे choice ना will always be theirs. हाँ, You know, would you बच्चे want? सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी किसी को. तो सुनना बहुत जरूरी. लिसन टू अदर्स. पेरेंट्स बच्चों को सुने, बच्चे पेरेंट्स को सुने. प्लीज बॉन्डिंग बनाइए. You know, मुझे एक बात याद आ गई before I conclude. आपने जैसे ही बोला ना कि सुनना बहुत जरूरी है, तो वो पीटीएम के दिन याद आ गए जब you know, आप कहीं पीटीएम अटेंड कर रहे होते हैं and you hear the parent walks into the classroom and looks at the teacher and says, "Madam, ये ना हमारी सुनता ही नहीं है." So I think listening is crucial. I think both the sides. अच्छा देखो, आप जो शरारती बच्चे के पेरेंट्स होते हैं ना, बेचारे ऐसा उनका फेस होता है. और जिसका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़े प्राउड से अपना कॉलर सेट करता है. Very true. Very true. Very true. मैं हमेशा टीचर्स को बार-बार ये बोलती हूँ कि आप प्लीज बच्चे को ना नेगेटिव मत बताया करो. Correct. बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बताएं. और वो बड़ा अच्छा है बच्चा भी. Correct. तो उसका पेरेंट भी बेचारा कॉलर ऊंचा करेगा. Very true. Very true. I think ये सारे बच्चों पे आज जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जब आपके पेरेंट्स स्कूल आए तो ये आपके हाथों में है कि पेरेंट का कॉलर ऊपर होगा या सर नीचे होगा. You know, so we leave it to you, all the kids out there. So thank you. With this, we'll come to the conclusion of the series. And I really want to thank you all the viewers, all the parents, all the educators, everybody for watching this. And इसमें से जो आपने inputs लेके implement करने हैं, the result will lie only in the implementation of the inputs that you It's take. very from important. here. Implementation is very important. True. And madam, thank you. Thanks to you for your valuable time. I know that you had a lot of other commitments, but despite that you could take out time. And आपने बहुत ही अच्छे inputs दिए हैं. उसमें humor भी था, उसमें power भी थी, and उसमें जो एक direction भी थी parents के लिए. So thank you very Actually, much. हमारा कैरिकुलम जो है हैप्पी मूड है ना, हैप्पीनेस एचआरडी कर रहे हैं, तो हम उसी में अपने बच्चों को रखना है. तो थैंक यू कमलनीत. बहुत ही अच्छा लगा आज हमें आपके साथ भी, कि आपके भी हमने वैल्यू पार्ट लिए हैं अपने, और हमारे स्टूडेंट्स भी देखेंगे आपने क्या एक अच्छा बताया उनको. थैंक यू सो मच. Most welcome. Looking forward to many more sessions. Thank you very much.